Hello members, this is someone from Upmove Stocks. We hope that you are doing well. So as we had mentioned in our Saturday's video, that Nifty 50 can move in the either direction because a candle named Doji was formed in its chart. You can see this candle. This was a Doji candle that we had discussed in our previous video on Nifty 50. So Nifty 50 has decided to go on the upside. So what has happened today is like it gapped up and maintained its gap up and closed above this critical level of 17946. So we will try to help you understand what is this 17946. Not only that, Nifty 50 has managed to close above the level of 18,000. So before discussing as to where we can see Nifty 50 in the days to come, let us first discuss the support levels and resistance levels for tomorrow. So the support levels that are coming to be important as of now would be 17946, this line. Okay, you can first take it as 17946. We have not mentioned it here because we will be discussing about this line separately. The second would be the low of today's candle, that is 17879. The third would be 17,843. We have been discussing about this level in almost all of our previous videos. You can check how we had arrived at this level. And the fourth would be 17,800. However, if 17,800 is also broken, then 17,780 is likely to act as a major support for Nifty 50 for tomorrow. Now let us discuss about the resistance levels. So the first resistance would be the high of today's candle, that is 18,016.80, already mentioned. The level 2 would be 18,042 and third would be 18,087. Now a lot of you will be wondering as to why we have taken resistance levels as to so close to each other, because you can see that there is hardly any resistance once we cross 18,200, 18,300. So we need to identify resistances at very smaller levels. So that is why we have tried to identify smaller resistance levels, because it is quite possible that Nifty 50 might touch any of these levels and tries to come back tomorrow itself. So you need to keep these three resistance levels in mind. However, if 18,087 is also broken on the upside, then we can see tomorrow 18,118 as well as 18,112 or 18,120. So resistance levels would be 18,016, 18,042, 18,087. Again, psychological level would be 18,100, but we don't believe that it is going to create a significant trouble for Nifty 50. So the next level would be 18,118 or 18,120 on the upside. So now where Nifty 50 can go from here, maybe in the days to come or weeks to come. So we have already mentioned in our previous videos on the basis of V-shaped recovery that Nifty 50 can touch 18,800 in the next few weeks or months. So what is happening is we have an important event that is likely to come in February this year, that is the annual budget. So that is the problem that could create a hurdle for Nifty 50 to go upwards, or it can act as a booster as well. So what is going to happen, that we will come to know only around the budget, because we will see a lot of volatility around the budget, either before the budget or on the date of budget itself. So what can happen if everything remains normal? So we have identified a flag pattern that has formed in Nifty 50 today, and the breakout of that flag pattern has also occurred today itself. Though it will not appear to you, it will not appear to you be a correct flag pattern, but yes, you can consider it, because Nifty 50 was in a consolidation in this area for past 3 to 4 days. If I take it a little lower, so it will look more convincing, but yes, I'm taking it on a conservative side, so I have taken it on the upper end. So now we will try to identify the target of Nifty 50 based on this flag pattern. Again, we have already taught you how to make the projection on the base of this pattern. You will have to identify two values: upper value of the pole, lower value of the pole. Upper value of the pole is obviously this line, which is 17,944.70, or to be precise, we'll take it as the exact value 17,944.70, and the 17,944, just a second, 17,944.70 minus the lower value of the pole, which is 17,238.50. So it is coming around to be 706 points.
So what you need to do to make a projection for Nifty 50 is you need to add the value of 706 to the breakout price, which is 17,946, or you can take it as 17,944 that we have taken as the highest value. So let us take it as 17,944. So it is coming around to be 18,650. So it is exactly coming around to be 18,650. So based on this flag pattern, we can say that Nifty 50 can touch 18,650 in the next few days or weeks, provided the uncertainty around the budget is not very strong and Nifty maintains its uptrend. Maybe not as strong as it is right now, but doesn't come back inside this flag or tries to break 17,700, maybe these levels. So then we can see further downside in Nifty 50. However, simply based on this flag pattern, the target is coming around to be exactly 18,650. So if this pattern holds correct and Nifty 50 continues its upward journey, we can see 18,650 in the very next few days or weeks. So we hope that this entire information is clear to support levels, resistance levels, and the flag pattern. In case you have any queries, concerns, or suggestions, please post them in the comment section. We will reply to them ASAP. Now we will be discussing this video in Hindi, ताकि हिंदी व्यूअर्स के लिए भी फायदा रहे. तो हम शुरू करते हैं. हेलो मेंबर्स, मैं अमन हूं अबू स्टॉक से. तो जैसा कि हम लोगों ने सैटरडे को डिस्कस किया था निफ्टी 50 के एनालिसिस में कि निफ्टी 50 दोनों तरफ में से कहीं पर भी जा सकता है, ऊपर भी या नीचे भी. ऐसा क्यों था? क्योंकि उस दिन जो कैंडल बनी थी वो एक डोजी कैंडल थी, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करती है रिटेलर्स के माइंड में कि निफ्टी 50 यहाँ से कहाँ जा सकता है. तो हुआ क्या कि निफ्टी 50 ने आज ऊपर की तरफ अपना मूवमेंट लिया और एक क्रिटिकल पैटर्न को ब्रेक भी किया, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. उस पैटर्न के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग अभी सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स को स्टडी कर लेते हैं, जो कि कल के लिए रेलेवेंट होंगे. तो जो पहला सपोर्ट लेवल कल के लिए निकल के आ रहा है वो है 17,900. दिस लाइन, जो ये लाइन है 17,946, या अगर आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट लेंगे तो 17,944 से 945 आप ले सकते हैं. तो 17,946 आपके लिए पहला मेजर सपोर्ट लेवल होगा कल के लिए. उसके बाद इस कैंडल का जो लो है वो होगा 17,879 आपके लिए दूसरा सपोर्ट लेवल होगा. तीसरा आपके लिए होगा 17,843, 17,843. अगर आपको इस लेवल के बारे में जानना है हमने कैसे निकाला है तो प्लीज हमारे पिछले वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल 17,800, और अगर वो भी टूट जाता है तो 17,780 एक मेजर सपोर्ट की तरह कल के लिए काम कर सकता है. तो ये तो आपके हो गए लेवल्स नीचे की तरफ. अब हम ऊपर की तरफ डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर आएगी. तो रेजिस्टेंस 3 लेवल पर आ सकती है. एक तो 18,016, जो कि आज का हाई है. इस कैंडल का जो हाई आप देख सकते हैं 18,016 है. दूसरा जो टारगेट आ रहा है रेजिस्टेंस वो आ रहा है 18,042, ठीक है. और तीसरा जो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 18,087. तो ये 3 लेवल्स ऊपर की तरफ कल काम करेंगे. जैसे जैसे एक एक लेवल टूटता जाएगा और कैंडल उसके ऊपर सस्टेन करती जाएगी, आपको ये तीनों लेवल्स कल दिखाई दे सकते हैं. अगर 18,087 भी टूट जाता है तो 18,100 साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके टूटने के बाद 18,118 या फिर 120 भी आ सकता है. ये ऊपर की तरफ लेवल्स हो गए. तो अब आप कहेंगे कि हमने लाइंस ड्रॉ क्यों हुई है, इनका पर्पस क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं. आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्लैग शेप कुछ पैटर्न बना है. हालांकि उतना कन्विंसिंग नहीं है, बट ये फ्लैग ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन चल रही थी इस रेंज में. रेंज थोड़ी बड़ी निकल कर आ रही है, बट फिर भी हम कंसिडर करेंगे इसको. तो अब हो क्या सकता है, हमें टारगेट कैलकुलेट करना है निफ्टी 50 का. तो हम पोल की ऊपर की वैल्यू निकालेंगे और पोल की लोअर वैल्यू निकालेंगे. पोल दिख रहा है आपको पिंक वाला, इसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू. तो अपर वैल्यू जो इसकी वो 17,944.70 आ रही है. वही जो हम आपको कह रहे थे कि लाइन भी इंपॉर्टेंट है. और दूसरा जो नीचे की तरफ वैल्यू निकल के आ रही है वो आप इस कैंडल पर जाके देखेंगे तो वो आ रही है 17,238.50 पैसा. जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू लगभग 706 पॉइंट के करीब आएगी. इस अपर वैल्यू का और इस लोअर वैल्यू का जब डिफरेंस निकालता है, जो डिफरेंस होता है वो 706 पॉइंट्स निकल कर आ रहा है. आप उसको ब्रेकआउट लेवल में ऐड कर देंगे, यानी कि 17,944 या 17,946 जो भी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, उसमें ऐड करने के बाद जो टारगेट आ रहा है वो 18,650 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है. मतलब इसके आसपास कहीं निफ्टी 50 आने वाले दिनों में जा सकता है, सिंपली इस फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे.
ऐसा नहीं कि वो एक बारी में ही ऊपर भाग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कल गैप अप खुले, ऐसे ऊपर जाए, फिर नीचे आए, इस लाइन को टेस्ट करे, क्योंकि अब ये जो लाइन है ये निफ्टी 50 के लिए एक तरह का सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि इसने आज इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यानी कि रेजिस्टेंस थी पहले और अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। तभी हम आपको कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये कल पहला सपोर्ट होगा निफ्टी 50 के लिए। ये टूटता है तो फिर बाकी के लेवल्स पिक्चर में आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी 50 कल इसको रीटेस्ट कर ले और ऊपर चला जाए, ऊपर जाना शुरू कर दे। तो 18,650 फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे आ रहा है, और जो वी शेप्ड रिकवरी हमने अपने पहले के वीडियोस में डिस्कस की हुई है उसमें तो टारगेट 18,800 अभी वैलिड चल रहा है। देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, इसमें कुछ हफ्ते और कुछ महीने भी लग सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि जो हमारा एनुअल बजट है वो पास में है और उसके अराउंड काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर सकती है, तो हमें थोड़ा सा वहां पर कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। बाकी अभी निफ्टी 50 स्ट्रांग लग रही है, पर क्या ये स्ट्रांग रहेगी वो हमें जनवरी के, आप कह सकते हैं आखिरी वीक में या उससे पहले वाले वीक में थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कंटेंट इस वीडियो को समझ में आ गया होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप हमारे कंटेंट के बेसिस पे कोई ट्रेड्स ना लें। ये लेवल्स आपके नॉलेज के लिए होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, किस तरह से लोग काम करते हैं, किस तरह से लेवल्स काम करते हैं। आप उनको मॉनिटर कीजिए डेली बेसिस पे और फिर हमें अपडेट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और कैसे लगे हमारे लेवल्स, क्या ये एक्चुअली में काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर आप कोई ट्रेड मत लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।